Hello everyone, welcome back. In previous lecture, I explained about the various die shearing operations and I discussed about the various operations such as blanking operations, piercing or punching operation, trimming operation, saving operation, notching, lancing and nibbling operation, and also explained the comparison between blanking and piercing operation. In today's lecture, I will be explaining about the progressive die, compound die and combination die. So let us start our today's lecture. So first let me explain about the simple dies, the how they are classified. The die described so far are used to perform only one operation per stroke of the RAM, and they are classified as simple dies. But when the quantity of the piece to be produced is large, more complex die are often used to increase the production rate. So the die includes in this category are progressive die, compound die and combination die. सो जहाँ पे क्वांटिटी है पीसेस की, नंबर ऑफ पीसेस की जो हम पार्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगर ज़्यादा है तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स डाई समटाइम्स यूज़ होती है टू इंक्रीज द प्रोडक्शन रेट. एंड डाई जो कॉम्प्लेक्स डाई है उसमें तीन टाइप की डाई है. फर्स्ट वन इज़ प्रोग्रेसिव डाई, सेकंड one is compound die and third one is combination die. Earlier we explained the various dies that were the simple die that are only used for single operation per stroke of the RAM. Now first let us discuss about the progressive dies. A progressive die uses two or more punch and die sets located at different set stations to perform a number of operations simultaneously in one stroke of the RAM. In just one single stroke, progressive die are capable of performing two or more punch operation. Punch and die sets are at different location of the station to perform number of operation simultaneously in a just single stroke. They can perform the operation of the RAM. Now the sheet is moved progressively from one station to another till at the last station a complete job is obtained. So the sheet starts to move progressively from one station to another till it last station a complete job is obtained. So there we can say there is a single pass of sheet in this complete process. A simple two-stage progressive punch and blanking die used for making washer is shown in figure here. This is our final product we can see over here. So this is our final product, that is washer, and that we have to manufacture using progressive die. And here there is one blanking punch and another one is piercing punch. So simultaneously there are two operations performed. First one is piercing operation and second one is, this is the first operation and this one is the second operation. So first this piercing punch pierce the hole and this sludge will come out of this and we will get a hole in the sheet. Next the feed is in this direction over the left side, so as the sheet moves to left side the blanking operation will be happening over here to the already pierced hole sheet. So simultaneously there are two operations performed in the single motion of the punch. There are two operations are performed and this is the washer making machine, and this way the die will be come or sheet will come out from this direction, and these are the stops to stop the sheet at particular position. So here the metal strip is introduced from one end and is advanced till the first station where the hole is punched in the first stroke of the ramp, and the metal is now advanced to the
next stage, and at correct distance set by the stop stop at shown in figure, जो करेक्ट डिस्टेंस है वहाँ तक ही उसको लिया जाएगा. As the ram moves down for its next stroke, the pilot on the blanking punch enters the hole pierced at the previous station to locate the sheet, while the working punch itself moves down to remove the completed washer. जो यहाँ पे क्या होगा आगे वाले स्ट्रोक में, जब रैम यहाँ पे मूव होगा, ठीक है, डाउन फॉर इट्स नेक्स्ट स्ट्रोक, द पायलट ऑन द ब्लैंकिंग पंच, यहाँ पे एक पायलट प्रोवाइड किया गया है ऑन द ब्लैंकिंग पंच, एंटर्स द होल पियर्स्ड, जो यहाँ पे पहले से होल पियर्स्ड होगा उसमें वो एंटर होगा. उसके बाद एट द प्रीवियस स्टेशन टू लोकेट द शीट वाइल द वर्किंग पंच itself moves down to remove the completed washer. और जो प्रीवियस स्टेशन में क्या होगा कि वो कम्प्लीटली रिमूव करेगा, जो हमारा कंप्लीटेड वॉशर है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा. ठीक, जो भी आगे हमने पंच किया है उसको रिमूव करने में हेल्प करेगा. इन द मीन टाइम अ न्यू होल हैज़ बीन पियर्स्ड एट द फर्स्ट स्टेज, और उसी टाइम में एक नया होल पियर्सिंग स्टेज में क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. इन ईच सब्सिक्वेंट स्ट्रोक ऑफ द रैम, टू ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, वन एट ईच स्टेशन एंड वन जॉब इज कंप्लीटेड एट द लास्ट स्टेशन. सो स्ट्रेट पीस ऑफ मेटल आर फीड मैन्युअली, मेंटेनिंग अ slight pressure on strip as it passes through the die. The stop controls the distance moved between the strokes by bearing against the surface of previously cut hole, and the stop may be automatically lifted free of the strip to allow the feeding, or it may be spring loaded from the below so that it pressed down into the hole under the weight of strip when the strip is moving. So the presses with automatic feeding arrangement are used for the large quantity of production. Here are some animations in which how the operation is performed. Here you can see there is one single operation of punching is performed, and if we combine with this punching operation and piercing operation, both are performed. Here in another figure you can see how the operation is performed. There are two operations at a time you can perform. Next is compound and combination die. So in compound and combination die, two or more functions are performed at the same station of the die. If the operation performed are similar kind, such as blanking and piercing die, is known as compound die. So when the die performs different kind of operation, such as shearing and drawing, or blanking and forming simultaneously, it is known as combination die. When the die perform different kind of operation, जैसे कि shearing operation हो गया, drawing, blanking, forming, so उसमें combination die होगी. और अगर compound die है तो उसमें जैसे blanking और piercing operation है तो वो compound die होगी. ठीक, जो सिमिलर काइंड के ऑपरेशंस है वो परफॉर्म होगी तो वो कंपाउंड डाई होगी. द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड कंपाउंड डाई इज देयर इज इन सिंगल स्ट्रोक इन कंपाउंड डाई two operations are performed, while in progressive die the step by step manner the operations are performed. In here now in figure you can see a simple compound die for producing washers, same way as we have seen in the progressive die. Here there is washer making die which is compound die, and in this it combines blanking and shearing operation at one station. The piercing punch
and the blanking die are bolted to the ram. The spring-loaded stripper for piercing punch is located with the blanking die. Here there is stripper for piercing punch which are spring loaded. Here we can see they are spring loaded. Here also strippers for the blanking punch, they are also spring loaded. And this is our piercing die. So from die, and here it is upper die, and this is blanking die, and this one is piercing punch. So at this comes over down over here, the piercing operation will take place over here, while the strips are here, and the blanking operation will be performed by this lower die as it pushes over here. And this is the blanking die. So two operations are performed in single stroke. The lower die has cutting edge on both sides. This is our lower die and it has cutting edge on both sides. यहाँ पे भी cutting edge होगी और यहाँ पे भी cutting edge होगी. The inner edge serves as a piercing. यहाँ पे इनर एज जो है वो पियर्सिंग ऑपरेशन के लिए वर्क करेगी, और जो भी आउटर एज है, inner edge will be piercing die for the piercing punch, while the outer edge serves as a blanking punch. जो outer edge है वो blanking punch के फॉर्म में यूज होगी. ठीक है. The blanking punch is so located that as the ram is lowered, the blanking operation is completed earlier than the piercing operation. यहाँ पे जो ब्लैंकिंग पंच को इस तरीके से लोकेट किया होगा कि जैसे कि रैम लोअर होगी, वैसे ही ब्लैंकिंग ऑपरेशन है वो कंप्लीटेड होगा अर्लियर देन द पियर्सिंग ऑपरेशन. ब्लैंकिंग ऑपरेशन से पहले पियर्सिंग ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होगा, और उसके बाद ब्लैंकिंग ऑपरेशन इज कंप्लीटेड अर्लियर देन पियर्सिंग. then this ensures that the metal strip is firmly held before relatively weaker piece punch contact it, and the spring loaded strippers plates can be stripper plates helps in knocking out the washer produce. जो स्ट्रिप्स है स्ट्रिपर प्लेट्स वो क्या करेगी, वॉशर को रिमूव करने में हेल्प करेगी. जो कॉम्बिनेशन डाई है वो हम आगे देखेंगे इन द ड्राइंग सेशन. it combines the blanking and drawing operation in the next session, but here I will show one animation of here. This is the combination die where the two operations are performed in the combination, that is drawing operation and piercing operation. So these are the about the compound die and combination die. So here there are two operations performed. When this blanking die comes over here lower, it works as a blanking, it cuts from here, and when the piercing punch comes over here, it punches a hole over here, and this is the stripper for blanking die. यानी कि ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको ये रिमूव कर देगा, और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो ये स्ट्रिपर्स है ये पंच के लिए स्ट्रिपर्स है. ठीक है, जो ये इसको पुश करेगा मटेरियल को. सो दिस इज अबाउट द compound die. Now compound and combination die. Now let us discuss the comparison of compound, combination and progressive die. So the comparison of compound, combination and progressive die is given here in the complete table. There are four features mainly for the comparison between compound, combination and progressive die. The first parameter is number of operations done at one station. In one station in compound die there is more than one operation is done. Similarly in combination die more than one operation is done. As we have seen in the figure, there are more than one operation done in single station,
while two or more operations are performed simultaneously in one stroke of the ram using different punch and die set. As we have seen in the figure, when the punch stroke comes, first piercing operation takes place and then blanking operation takes place. Well, here simultaneously यहाँ पे जो है वो साथ में नहीं होगा ऑपरेशन, लेकिन एक के बाद एक यहाँ पे एक ही स्ट्रोक में दो ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, दो या उससे ज़्यादा ऑपरेशन भी परफॉर्म किए जा सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द प्रोग्रेसिव डाई. द फर्स्ट पैरामीटर, नंबर ऑफ ऑपरेशन डन एट वन स्टेशन, कितने ऑपरेशन हम कर सकते हैं एक स्टेशन पे. दूसरा जो पैरामीटर है, टाइप ऑफ ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं इन कंपाउंड डाई. ओनली कटिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म, वाइल जो कंपाउंड डाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ कटिंग ऑपरेशन होगा. अब जैसे कि हमने देखा वॉशर का हम मैन्युफैक्चरिंग देखा, उसमें सिर्फ और सिर्फ कटिंग ऑपरेशन पॉसिबल था. जबकि कॉम्बिनेशन में कटिंग भी हो सकता है, फॉर्मिंग है, बेंडिंग है, ड्राइंग है, तभी उसका नाम यहाँ पे कॉम्बिनेशन रखा है. कॉम्बिनेशन में जो डिफरेंट ऑपरेशंस है उन सब का कॉम्बिनेशन किया गया है. वाइल प्रोग्रेसिव डाई में जनरली ओनली कटिंग ऑपरेशन लाइक ब्लैंकिंग एंड पंचिंग, ये दो ऑपरेशन है मेजरली, जैसे कि कटिंग ऑपरेशन हो गए, ब्लैंकिंग है या तो फिर पंचिंग है. प्रोग्रेसिव डाई में यही दो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगी, जनरली ब्लैंकिंग एंड पंचिंग. देन नेक्स्ट पैरामीटर इज शीट मोशन. हियर मोर देन वन ऑपरेशन इज परफॉर्म एट सेम स्टेशन. सेम स्टेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म होगी. यहाँ पे भी सेम स्टेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, क्योंकि जो कॉन्फ़िगरेशन है वो दोनों की सेम है. द ओनली डिफरेंस इज द टाइप ऑफ ऑपरेशंस. देन इन प्रोग्रेसिव डाई, लाइक मेकिंग ऑफ वॉशर इन्वॉल्विंग पंचिंग एट फर्स्ट स्टेशन एंड ब्लैंकिंग एट नेक्स्ट स्टेशन. सो इन दिस वे द शीट मोशन वर्क्स. Half of operation is done in the first station and another half of operation is done in the next station. So what are some of the example of the various processes? So for compound die, the blanking and piercing operation like producing washer can be used, as we have seen. Then combination die, जैसे कि ब्लैंकिंग और ड्राइंग ऑपरेशन, जैसे कि कप मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस है हमने जो एनिमेशन में देखी, ठीक है, वो उसके लिए कॉम्बिनेशन डाई यूज़ हो सकती है. फिर जो शीट है, शीट इज़ मूव्ड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर टिल एट द लास्ट स्टेशन अ कंप्लीट जॉब इज़ ऑब्टेन्ड. सो दिस इज़ द एग्जांपल वेयर द शीट इज़ मूव्ड फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट स्टेशन, जब तक हमको लास्ट जो प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट हमको मिल नहीं जाता. सो दिस इज़ अबाउट द प्रोग्रेसिव डाई. So this is all about the compound die, combination die and progressive die. So this is it for today's lecture. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.